everyone. Welcome on our series on Indian Constitution, where we will be talking about different aspects of Indian Constitution. We are starting this series from a very important topic, which is preamble. So the Constitution of India starts with an opening statement, also called as the preamble of the Constitution. ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट की तरह एक्ट करता है जो एक गाइडिंग पर्पस एंड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को स्टेट करता है. ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस, उसकी फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव को शोकेस करता है. प्रियम्बल इंडिया को एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बताता है. एंड इट स्टेट फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. So it states that one of the objective is to secure justice and liberty in the country. The second one is सारे citizens में equality maintain करना. The third one is to promote fraternity, to maintain unity and integration of the nation. But these are the objectives. Let us now dive a little deeper and understand preamble in little more detail with focusing on keywords from it. So the preamble starts with the phrase "We the people of India." And then it talks about sovereignty. So sovereign का main meaning ये होता है कि India is not governed by any external power and the legislature has power to make laws for the country. The second important term is socialist. It basically means that it is state's responsibility to maintain the welfare of its citizens and to promote equal distribution of wealth and secure justice for all and to abolish discrimination. ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज सेक्युलर. ये बेसिकली शो करता है दैट सारे रिलीजन्स इक्वली रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड हैं इन द नेशन. द नेक्स्ट टर्म इज डेमोक्रेटिक. इट स्टेट्स दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन वेयर द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री एंड फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट टर्म इज रिपब्लिक, जो बेसिकली मीन करता है एंड इंडिकेट करता है दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, विच इज द प्रेसिडेंट इन इंडिया. Now, preamble also states some of the main objective. So, one of the main objective of the Indian Constitution, which is stated in the preamble, is to maintain integrity in the society and promote harmony and unity among citizens. अब वो क्या factors हैं जो help करते हैं to achieve these objectives? So, some of the factors are, first one is justice. Justice is also of 3 types, जिसमें social, economic and political justice आता है. ये सिक्योर करने के लिए we have fundamental rights, duties and directive principles of state policy, which we will be talking about in a more focused way in our upcoming videos. The other factors हैं equality, liberty and fraternity. But क्या आप जानते हैं that preamble is discussed many times in Supreme Court also, and we are going to discuss that case laws, but I am going to state one major case law right now. सो प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक वैलिड पार्ट माना गया है एंड ये डिसाइड हुआ था इन केशवानंदन भारती केस. एंड इस जजमेंट को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे इन अवर अपकमिंग वीडियोस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. So from the next video we will start covering main articles of the constitution, so stay tuned for more.